welcome back to another session of our personal finance series Moneyfy Mantra. जैसे कि आप जानते हैं मनीफाई में हम पर्सनल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड से जुड़ी अनेक बातें करते हैं एंड उसी उसी सीरीज में आज हमारा एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है. आई थिंक बहुत ही कीमती टॉपिक है आज का, विच इज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स. सो ये टॉपिक पे आज हमारे साथ बात करने के लिए टाटा एएमसी से तपन पटेल इज विद अस. तपन भाई केम छो? हाय हर्ष, बस मजामा, थैंक यू. So Tapan has been associated with Tata AMC for almost more than I think one year. He has a vast experience of 15 years in commodities, where he has worked with HDFC Securities, LKP Securities, and Kotak Commodities. So Tapan bhai, will try to learn a lot of things about gold and silver market today. And a very warm welcome to Moneyfy Mantra. To everyone, to all the viewers, if you have any questions, please post it on the chat. We will try to respond within a day. And if you like this video, please click on the like and do follow us on Facebook, Instagram, and various other social media platforms. So Tapan, the first question for the day, what's the history, of gold and silver, as a precious metal? Yeah, thank you Harsh, and thank you Moneyfy Mantra team for having me. And as you said, you are going to learn many more things regarding gold and silver in our conversation. But I think Indian investors को gold और silver के introduction की कोई जरूरत नहीं है. Indian people are emotionally attached with gold and silver by cultural diversity and traditionals. ठीक है. सो हिस्ट्री की बात करें गोल्ड और सिल्वर की, देन हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम 5000 BC फॉर गोल्ड, व्हेन पीपल यूज्ड टू यूज गोल्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस एंड ज्वेलरी इन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न अफ्रीका. उसके बाद अगर हम 2600 BC की बात करें तो इजिप्ट में जो सिविलाइजेशन खड़ा हुआ वहां पे गोल्ड का इस्तेमाल बढ़ा था और वहां पे पॉपुलैरिटी बढ़ी थी. और उसके बाद 500 BC और 476 AD में जो रोम ने गोल्ड कॉइन्स का यूज शुरू किया था, तो वहां से गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू हुआ एज ए करेंसी. और 1800 से 1870 की बात करें, वो पीरियड था कि गोल्ड के लिए काफी बेहतरीन था, कि वहां से अमेरिका का डिस्कवरी हुआ था. और अमेरिका और ऑस्ट्रिया में गोल्ड रश जो बोलते हैं वो वहां पे हुआ था, क्योंकि माइनिंग गोल्ड की शुरू हुई थी, तो गोल्ड काफी तादाद में वहां पे पाया गया था. तो वहां से गोल्ड के लिए एक सुनहरा युग बोलते हैं, तो शुरू हुआ था. और 1870 से 1914 जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड हम पीरियड बोलते हैं वहां पे, क्योंकि एक सेंट्रल करेंसी था गोल्ड. कोई भी बायलैटरल अगर ट्रेड होता तो गोल्ड एक सेंट्रल करेंसी वहां पे रहता था. लेकिन ये जब चेंज हुआ सब वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस डॉलर जो है उसको गोल्ड के साथ पैक किया गया, और तब से यूएस डॉलर का डोमिनेशन हमको दिख रहा है ग्लोबल ट्रेड्स और ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम में. और 20th सेंचुरी से वापस से गोल्ड का यूजेज जो है एज ए इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, कि काफी इकोनॉमिक कोलैप्सेस देखे गए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखे गए, मार्केट अनसर्टेनिटीज देखी गई है. उसके कारण गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है वो बढ़ी है. और आज भी अगर हम देखें तो पिछले 20 साल की अगर बात करें तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है. जो बुल साइकिल जो है वो काफी आई है पिछले 20 साल में. तो ये अब तक का जो है गोल्ड का जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको बताया. सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी सेम चीज है. सिल्वर में भी अगर हम 3000 साल पीछे जाएं तो वहां से सिल्वर का यूसेज दिख रहा है. और सिल्वर वेयर, जो सिल्वर के बर्तन जो है वो यूज होते थे एज ए करेंसी सिस्टम, जो है वो इजिप्ट में, सॉरी ग्रीस और इजिप्ट से शुरू हुई थी वहां पे. और स्पेन में भी काफी यूज हुआ था वहां सिल्वर वेयर जो बोलते हैं, और ऑर्नामेंट्स और करेंसी के रूप में. उसके बाद जो है वो सिल्वर का यूज जो है इंडस्ट्रियल मेटल से काफी होने लगा था रूप में, क्योंकि काफी इंडस्ट्रीज जो है उसमें सिल्वर का यूज होता है. और आज भी अगर हम देखें तो हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब में सिल्वर का यूज हो रहा है. Correct. So I think over the past
थिंक 2 centuries, द गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की जो यूज केसेस है काफी हद तक बढ़ गई है, स्पेशली इंडिया एंड चाइना। आई थिंक ये दोनों मार्केट जो है सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट कर रही है आज की तारीख में। कूल। सो नो तपन, फॉर एन इन्वेस्टर हु इज इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज, जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सब इन्वेस्टर्स को गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट किस तरह से देखना चाहिए, और ये इतना इंपॉर्टेंट एसेट क्लास ओवर द पास्ट 2 decades और 3 decades क्यों माना गया है? यस, सो जब भी गोल्ड का जिक्र होता है इन्वेस्टमेंट फैटर्निटी में, तो एक ही वर्ड आता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या फिर इन्फ्लेशन हेज। ठीक है, ये दो चीज एक मेन काफी बार उभर के आती है। व्हेन पीपल टॉक अबाउट गोल्ड, दे invest for these two reasons only. But if we see the history, or like I said, past 20 years, we have seen many market uncertainties. In 2000, we had dot-com bubble. From 2008, we have great financial crisis. Then European crisis were there. Later on, in recently, COVID pandemic hit the world. तो इन सारे सिनेरियो में अगर देखें तो गोल्ड ने इक्विटी मार्केट्स को बीट किया है। ठीक है, तो मेन चीज यही है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स जो है, जिन जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन गोल्ड का एक्सपोजर उनको क्यों लेना चाहिए और क्यों एज ए इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है गोल्ड। तो यही सारे रीजन है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन जब होता है या फिर मार्केट अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, तब गोल्ड अपना वैल्यू जो है वो प्रोटेक्ट करता है। उसका कोरिलेशन जो है बाकी एसेट से काफी कम है। इसके कारण बाकी सब एसेट जो है अगर परफॉर्म नहीं करती, तब भी गोल्ड जो है वो अपना वैल्यू प्रोटेक्शन देता है और उसकी जो वैल्यू है वो उतनी ही रहती है। तो मैंने जो सारे सिनेरियो जो मेंशन किए, उसमें अगर हम हिस्ट्री निकाल दें, तो कोविड में भी अगर देखें तो इक्विटी मार्केट 40% से ज्यादा का गिरा था, जबकि गोल्ड में 40% प्लस की रैली आई थी। ये है। और दूसरा चीज जो है, मैंने बोला कि वैल्यू प्रोटेक्शन रहती है गोल्ड में। तो लो की रिलेशन है बाकी एसेट क्लास के साथ, करेंसीज के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, प्लस जो यूएस यील्ड है, बॉन्ड यील्ड, उनके साथ भी उसका नेगेटिव कोरिलेशन है। तो जब भी रिसेशन पीरियड आता है, बॉन्ड यील्ड घटते हैं, तब भी गोल्ड को यहाँ पे फायदा होता है। तो इन सारे सिनेरियो में अगर हम इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात करें जो अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या फिर थोड़ा भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो गोल्ड एक बेहतरीन एसेट क्लास के रूप में आ रहा है। सही है। सो अगर हम देखा जाए कि गोल्ड के यूज केसेस, सो गोल्ड के यूज केसेस आर लिमिटेड टू क्रिएटिंग ज्वेलरी और एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, वर्सेस सिल्वर के काफी हद तक यूज केसेस है, जैसे इंडस्ट्रियल यूज केसेस है, बिकॉज वी आर नाउ इन द इंडस्ट्रियल फेज। सो गोल्ड एज एन एज एन कमोडिटी, इसका प्राइस किससे डिराइव होता है? सो गोल्ड की बात करें तो मेनली माइनिंग से गोल्ड आता है, और जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। रिसाइकल गोल्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन रिन्यू नहीं कर सकते। तो माइनिंग जो सप्लाई है गोल्ड का, वहां से गोल्ड मेन आता है। और बाकी कंट्रीज के हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि डॉलर के साथ पैक किया हुआ है, तो जहां पे भी इंपोर्ट होता है तो वहां पे कन्वर्जन के रूप में बाद में डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई के हिसाब से वहां पे प्रीमियम या डिस्काउंट डिसाइड किया जाता है। तो इस हिसाब से फिर गोल्ड की प्राइस डिटरमाइन होती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह ऐड करके। तो वही चीज है कि गोल्ड का यूजेज जो है काफी वास्ट है। पहले तो जैसे मैंने बताया कि ट्रेडिशनल यूज है, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, गोल्ड कॉइन्स बार के रूप में यहाँ पे यूज होता है। एडिशनली इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय करती है अपने फॉरेन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो क्लास है, गोल्ड ईटीएफ्स है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वहां पे गोल्ड का यूजेज ज्यादा रहता है। एंड थर्ड थिंग जो मैंने बताया कि ज्वेलरी और बार और कॉइन डिमांड्स वो रहती है। इंडस्ट्रियल यूजेज जो है गोल्ड का काफी अभी मिनिमल है, लेकिन अगर हम मेडिकल पर्पज देखें या डेंटिस्ट्री में देखें, वहां पे गोल्ड का यूज है। और आगे जाके हाईटेक जो इनोवेशन हो गए, वहां पे गोल्ड का यूज थोड़ा बढ़ सकता है। तो गोल्ड का यूज देखें तो वाइडली इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल कंजम्पशन पे है, इंडस्ट्रियल यूज काफी अभी लिमिटेड है। लेकिन दूसरी तरफ सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हैज मेनी यूजेज एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी, एंड सिल्वर सप्लाई इज ऑल्सो कम्स फ्रॉम बाय प्रोडक्ट ऑफ माइनिंग ऑफ अदर कमोडिटीज। तो सिल्वर इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट अगर हम देखें तो वहां पे उनका अनुमान है कि 28% ही सिर्फ सिल्वर प्योर माइनिंग से आता है। अदर 72% कम्स फ्रॉम बाय प्रोडक्ट ऑफ माइनिंग अदर मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, एक्सेट्रा। तो सिल्वर सप्लाई इज लिमिटेड and demand is going to grow due to industrial production, industrial consumption, and that's why silver is going to give you, you know,
face some supply crunch over the years when industrial usage will grow. Because if we see from electronic use like computers, mobile phone, laptops, mirror, and high technologies like 5G technologies, electric vehicles, solar PV installations. In all these industries, silver is a center part. That's why silver's industrial use is very high. करेक्ट. सो ये सब हमने समझा कि गोल्ड एंड सिल्वर के काफी सारे यूज केसेस है. बट अगर मुझे प्राइस डिटरमाइन करना है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर बोथ, स्पेशली गोल्ड, बिकॉज इंडिया में जो प्राइस होते हैं वो आईएनआर में होते हैं वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडी में या आउंस में गोल्ड का प्राइस डिराइव किया जाता है. सो क्या डिफरेंस रहता है इंटरनेशनल और इंडिया के प्राइसेस में? जी, तो गोल्ड की प्राइसेस जो है बेसिकली डिराइव होती है इंटरनेशनल बेंचमार्क से ही. जैसे क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल बेंचमार्क है, WTI है, ब्रेंट है, वैसे गोल्ड के लिए भी फिलहाल एक बेंचमार्क यूज होता है जो है LBMA, जिसका फुल फॉर्म है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन. So London LBMA is a benchmark reference rate for gold and silver price determination, and all over the world, the importers use those benchmark as a reference price. Even if in India any bank or importer is importing gold, then LBMA reference rate is used. Once gold is landed in India, it attracts custom duty. Then we have currency conversion, and plus the purity conversion is also there. So if it is a 995 or 999 purity, as per that the premium or discount decides. And after that we have transportation cost from where from port or from landing place to the vault. The transportation cost is calculated, and based on domestic premium demand supply, premium and discount is calculated. So ऐसे गोल्ड और सिल्वर की प्राइस जो है वो डिराइव होती है डोमेस्टिक प्राइस के लिए. जब कोई इंडिया में हम प्राइस अगर देते हैं टर्म में है तो ऐसे प्राइस डिटरमाइन होती है जनरली. करेक्ट. सो आई थिंक इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स या प्रोसेसिंग कॉस्ट लग जाता है टिल द टाइम इट कम्स टू द एंड यूजर. Great. So, Tapan, tell me, while we've now understood, what is gold and silver, how the prices are derived, and what are the use cases of these products. What are these gold mutual funds now? Gold and silver both, we have now both gold and silver mutual funds available in the market. Give us some more information how these products are created, how one should look at it. Now, how does investors benefit out of these? Yes, so the idea of mutual fund for having gold and silver as a product must become that even a retail investor or small investor can have ownership of gold in a smaller quantity. If you go out in the market and if you want to buy even 1 gram of gold, you have to pay 600 rupees, right? So that's why it is quite costlier for investor to buy a gold from physical market. So mutual funds gives an opportunity to an investor to own a gold at a very smaller quantity, so in very smaller rupee denominations. So that's why mutual fund buys gold on behalf of investors and keep them in a warehouse and create units so that they can anytime buy units and sell redeem units with the value of gold without even physically owning it. So this is the basic idea of why mutual funds are created for owning gold and silver. Also for investors who are into mutual fund industry or who are into equity markets, they can have an option of diversify their portfolio by owning mutual funds who are providing gold and silver as a ETF product, right? So rather than owning physical gold and silver to diversify a portfolio, people have an option now to own in a demat form of units of gold and silver ETFs. Correct. So, sometimes, most of the investors, when they see gold and silver, they understand, but then later, there's a suffix attached to it like an FOF or an ETF. So would you, take a minute or two to just help investors also understand these terminologies and not get confused? Yes, sure. So, exchange traded fund, when a mutual fund launches ETF, AMC directly invest in a physical gold. They buy physical commodity, or whether it is a gold ETF or silver ETF, and they store that physical quantity in a warehouse.
Of that value, they generate units to the investors. This is the simple structure of ETF. So in this case, mutual fund is just a facilitator to the investors who are giving money and want to own gold in form of units. Fund of funds are just a replica of ETFs. The fund of fund generally invest in those ETFs uh, of gold and silver or that underlying funds. So this is just a replica of ETFs. Only difference is that ETF is a secondary market product, while FOF you have to go through the mutual fund way. So anyone who is having demat account can go and buy ETFs units in from the secondary market because it is exchange listed. While fund of fund, you have to go to the mutual fund company in the form of lump sum investment amount or with an option of SIP. Correct. So I think Tapan, very good explanation. I think till now we have covered what is gold and silver, what is gold mutual fund, what is silver mutual fund. Now, I think one very difficult question for every investor is, now you have multiple products. You have gold, physically available with the jewelers. You have sovereign gold bonds. I think that's one very hot selling product when it's available. And the third is obviously gold and silver mutual funds. So, which product to select and why for an investor? Could you cover some bit of details about the decision making process for an investor? Yes, definitely. So first of all, when we go buy and to buy physical gold or silver from the market, from the spot market, we have to pay making charges. There is a storage cost linked to it because you have to store it in a bank locker or else otherwise there is a uh, chance of theft also. So these are the risks associated to owning a physical commodity in form of gold or silver. While ETF or an SGB, both are eliminating this risk. Correct. Now we will come to the sovereign gold bond, where government issues sovereign gold bond in tranches. Also, it comes with a maturity period. So, like we have sovereign gold bond who has maturity period of 8 years. In also, we have 5 years lock-in for these bonds. So, before 5 years, you cannot sell liquidate these bonds. So, this is a a time maturity associated with it. If we consider ETFs, it's a very easy way to invest in gold or silver without any risk that we have discussed, like no making charges, no storage cost, no risk of theft, or no maturity period. And it is easily you can go and buy from the market and go and sell the units because quite liquid and volume driven market. So this is the main benefit and differentiate between physical commodity ETFs and sovereign gold. Correct. So I think most of the questions are answered. I have one question for myself, for the audience as well. So when I go to a jeweler to buy gold, so he charges the price of the gold which is there in the market. Plus he charges us 3% additional GST because the government wants him to pay GST. Yes. Additionally, there is something called as bid and ask. So when I ask my gold vendor, I want to buy gold, he says that you will be given a 63,000 rupees of price. But when and to the same gold jeweler, I ask him that I want to sell my gold today, and he gives me a lower quote. So what are these transaction charges, and are these also applicable for gold mutual funds? And how does investors benefit more from going digital through gold mutual fund rather than going and buying such gold from the gold vendors? Yes, so basically, GST is a common charge that we used to pay whenever we buy any service or product. Uh, the bidder spread that you ask when a physical vendor or physical jeweler is charging you, it's basically that what I said, the transportation cost and everything. So if he's selling you gold at a higher rate, higher spread, because he has incurred that cost from the previous seller, like transportation cost and domestic premium. That is what he is passing on to you. When he's buying from you,
as a lower level. So he's not, you are not having any transportation cost or anything, right? And he's going to pass it on to the next buyer. Okay, got it. So I think there's a gold and silver ETF, FOF, NFO, which is live in the market right now. So Tapan, would you want to just cover some more details about this NFO and who should look forward to invest in this NFO? Yes, sure. So as in the starting of our conversation, you said that in a new year we are discussing something shining or glittering. That's what we have come up with a product NFOs whose underlying is quite shining and glittering. So we have come up with a gold ETF, gold ETF fund of fund, silver ETF, and silver ETF fund of fund. So we believe that there is no right or wrong time to invest in gold and silver. And with addition, there is the current environment is also supporting, because if we see the US micro or macro environment and global economic environment, there is still an uncertainty going on in the market. There is a recession, soft landing or mild recession risk on US economy, and the central banks are also on a verge of quite loosening the monetary policy. We may expect some rate cuts in current year also, or maybe next year also. Plus, the bond yields are at peak level, and anytime we can expect some ease out in this high yield environment. So these all all factors are quite supportive for gold and silver prices. And if we see central banks demand, so it is also quite robust. Even in the previous years, we have seen robust buying from central banks. And even if we see gold ETF level at global level, so even global ETF flows have quite minimal level. They have not even uh, started yet to, uh, major inflows are not coming yet. So we may expect these ETF inflows will come again into the market maybe in the first quarter of this year or maybe second half of this year. So overall environment is quite supportive. Geopolitical tension are additional to this, because we are seeing Israel-Gaza conflicts, Russia-Ukraine war is still on, and that their repercussion actions are we are going to face in the market, because we are seeing the risk of trade system in the Middle East or through Red Sea through. So these are the risks associated with the market, and that's why gold and silver we are expecting that will have a robust run with the coming years also. So this is the basic market environment currently which can support gold and silver. Plus, Tata Gold ETF and Tata Silver ETFs are coming with lowest value per value of unit. Tata Gold ETF is coming with per unit value of 1 milligram, while Tata Silver ETF unit comes with 100 milligrams of weight. So this is the lowest weight where काफी अफोर्डेबल है इन्वेस्टर्स के लिए, और छोटे से छोटा इन्वेस्टर्स भी स्मॉल अमाउंट के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं, तो एक बेनिफिट है. Great. So thanks Tapan for taking us through to both of these products, gold and silver ETF FOFs. I think it was a wonderful session today. I think most of our investors would take forward all the learnings and make a better decision for their investments going forward. So thanks Tapan for your time and patiently answering all the questions. And if you have any closing remarks for our investors, please share. Yeah, sure. As we have discussed all the factors and all the benefits of owning gold and silver as a part of portfolio, it is recommended that one should have at least 8 to 10% of exposure to gold and silver in a portfolio, because, as I said, the current environment is supporting. Plus, bull cycles are continuously increasing in the uh, since past years. So these are all going to benefit in any investors to own gold and silver as a part of their portfolio. Thank you. Correct. Thanks, Tapan. So to all our viewers, you can, if you want to invest in gold and silver ETFs, fund of funds, please do download Moneyfy. Moneyfy में आप gold और silver ETFs FOF में SIP के through with a very small amount of 500 you can start. To download Moneyfy, we have given the link in the description. And do like, subscribe
our channel, and we will come out with more such interesting videos going forward. Thanks, Tapan. Thanks, everyone. Thank you very much.